we are going to discuss about the refraction process. And refraction process involves the image formation of an object through lenses, right? So starting with the refraction. और प्रीवियस चैप्टर जो रिपल टैंक में हमने रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया था, तो वहां पर चेंज ऑफ मीडियम शैलो और डीप वाटर की कंडीशन में था, राइट? और यहाँ पर अब जो मीडियम चेंज होगा वो ग्लास के थ्रू चेंज होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास रेयर और डेंस का कॉन्सेप्ट होगा। और सेम कॉन्सेप्ट हम जो अप्लाई करते आए हैं अपने रिपल टैंक के कॉन्सेप्ट में, तो सेम कॉन्सेप्ट गोज हेयर फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन रिफ्रैक्शन we already discussed that bending of waves, and in this chapter bending of light waves, right? So light waves are going to be bent through the dense medium, or when lights are passing through dense to rare, so both possibilities are there. Bending of light waves which are going to be passed through any medium, right? So first, if we discuss about the bending of light, so there are two types of refraction or bending of light possible in the process of refraction. तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी हमारे पास कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ट्रैवल करेगी, राइट? तो एक पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास रेयर टू डेंस, और सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास होगी फ्रॉम डेंस टू रेयर, राइट? यस। और अगर हम फर्स्ट कंडीशन यानी रेयर टू डेंस की बात करें, तो रेयर टू डेंस में आपके पास आप डेंस मटेरियल कंसिडर जो करोगे, और जो रेयर मटेरियल हम रेयर मीडियम कंसिडर करेंगे, तो दोनों में हम किस मीडियम की एग्जांपल को फॉलो करें? कोई एग्जांपल? रेयर के लिए तो हमें पता है हम नॉर्मल एयर को ही कंसिडर करते हैं, राइट? जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मीडियम है, तो वो आपके पास रेयर मीडियम होगा, लाइट मीडियम। और डेंस के लिए हमें क्या करना होगा? वाटर। यस, वाटर। और वाटर एग्जांपल हमारे पास डेंस की एग्जांपल में होगा। और सेकंड, अगर हम एक और रेफरेंस यूज करना चाहें मटेरियल का, तो हम ग्लास भी यूज कर सकते हैं, राइट? यस। बिकॉज ग्लास इज ऑल्सो डेंस एज कंपेयर टू द एयर। So let's suppose if light rays are passing from air to glass or air to water, so there is a difference of medium there, and the upper part is made up of dense material, or you can say that rare material, rare medium. So this medium is going to be rare, and the second one is the dense one. और डेंस में भी हम वाटर और ग्लास स्पेसिफिक किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, हम कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम बेसिक आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं दोनों में, कि हमारे पास दोनों में डिफरेंशिएट किस तरह से होगा जब लाइट ट्रैवल करेगी रेयर टू डेंस और डेंस टू रेयर, राइट? तो सेम एग्जांपल जो हमने रिपल टैंक के लिए सॉल्व की थी, आप एंगल मेजर करने के लिए क्या मेथड फॉलो करते हो? अगर आपने एंगल मेजर करना हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो नॉर्मल। नॉर्मल लाइन, तो यहाँ पर हमें नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी होगी एक। तो यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्मल लाइन आ गई विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
This is our normal. And now a light ray which is passing from rare medium, which is of air, into the dense medium. So this is the light ray which is start moving from the rare medium. This is our incident angle. So what will be the direction of wave after passing into the dense medium? Let's suppose this Toward? medium is of glass, towards normal Yes. और away from normal. रिपल टैंक पे हमने क्या किया था? Sir, is rare to dense towards the normal? ओके, टुवर्ड्स नॉर्मल. और सेकंड कंडीशन में क्या होगा फिर हमारे पास? अवे Away फ्रॉम from नॉर्मल. normal? यस. तो आपने सेम फिनोमेना यहाँ पर ड्रॉ करना है और आप डायरेक्शन ड्रॉ करके दिखा सकते हो किस डायरेक्शन में लाइन आप ड्रॉ करोगे? Um, Near the second normal line? सेकंड नॉर्मल लाइन. ओके. तो रिफ्रैक्शन में आप कह रहे हो कि टुवर्ड्स नॉर्मल होगा आपके पास जब हम एयर टू ग्लास मूव कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आपके पास टुवर्ड्स नॉर्मल का फिनोमेना यूज करोगे आप. और जो आफ्टर पासिंग थ्रू डेंस मीडियम light is going to be bent towards normal, or you can draw in somewhere in this direction. So this is our angle of refraction, right? और अगर आपने एंगल्स को कंपेयर करना हो, इफ यू वांट टू कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, so which angle is going to be greater? Is it angle of incidence or angle of refraction? Incidence? Yes, angle of incidence will be greater than angle of refraction, right? और सेम आपने रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टर्म्स यूज की थी, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे होगी. नॉर्मल हमने मेंशन कर दिया. और यहाँ पर ये जो रे होगी आपके पास, दिस रे इज गोइंग टू बी इंसिडेंट रे एंड द सेकंड वन इज refracted because there is a bending process involved there. So this ray is going to be known as refracted ray and the first one is incident ray, right? So angle of incidence will be greater than angle of refraction. और अगर आप इसको दूसरी टर्म्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि लाइट रेज विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट? तो हम इसे दूसरी तरह भी सम अप कर सकते हैं कि लाइट रेज विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. अब आपके पास यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरलिंक होते जाएंगे तो थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा. और सेकंड के लिए अगर अब आपने डायग्राम ड्रॉ करना हो तो सेकंड के लिए आपके पास ये आइडिया होगा कि यहाँ पर टूवर्ड्स नॉर्मल है, तो जब आप डेंस टू रेयर मूव करोगे तो आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, द रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग टू बी मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? So in second condition, if there is a glass medium again and light is going to be travel from dense to rare, so first we need to draw a normal line. This is our normal line, and if we consider an incident ray which is passing from dense to rare, this ray is going to be our incident ray and this angle is equals to angle of incidence
and after passing through the medium, this medium is going to be dense, and the upper one is known as the rare medium. So in this situation, we just need to draw a straight line which is passing away from the normal, right? So the direction of way is somewhere at this point. Angle of refraction, right? So in this situation, angle of refraction is now greater than angle of incidence. Angle of refraction is greater than angle of incidence. तो अगर आप ये पॉइंट भी याद रख लेते तो इससे भी आपको इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना डायरेक्शन ऑफ रे, बिकॉज यू नो दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपकी जो इंसिडेंट रे होगी और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, इन दोनों के एंगल्स को आप जब ग्रेटर और लेस करके ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको इंडिकेट करेगा कि वो टुवर्ड्स नॉर्मल है या अवे फ्रॉम नॉर्मल है, राइट? तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. Light rays will bend away from the normal. Any confusion? No, sir. Okay, so this is the basic phenomena of refraction in terms of light, and this is same as we already discussed in the topic of repel tank, right? तो मीडियम हम कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने क्योंकि बेसिक रिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखा है तो अभी हम इनका कंपैरिजन नहीं करेंगे। कंपैरिजन के लिए हम अभी फर्दर जब टॉपिक को डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वहां हम इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे कि ग्लास और वाटर में क्या डिफरेंस होगा, राइट? ओके, तो ये आपके पास रेयर टू डेंस और डेंस टू रेयर की कंडीशन हो गई, राइट? ओके, Yes. के बाद अब जब ग्लास और वाटर को कंपेयर करना है हमने यहाँ पर, so there is a term which is known as refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म यूज करते हैं हम कंपेयर करने के लिए कि आपके पास लाइट जो बैंड होगी वो कितने वैल्यू से बैंड होगी, क्वांटिटी क्या होगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल टेल यू द वैल्यू ऑफ दैट refraction or bending of light when passing from one medium into another. So if we define refractive index, so in simple terms you can define that it is the ratio of refractive index is the ratio between sine angle of incidence sine angle of incidence किसके रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे? इट इज द रेशियो बिटवीन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ Refraction? yes, to the sine angle of refraction. To the sine angle of refraction. तो इस क्वांटिटी से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो दोनों एंगल्स का रेशियो फाइंड आउट करके। और जो सिंबल यूज करेंगे, द सिंबल फॉर दिस क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल n, and if you want to write the formula for it, so refractive index n will be equal to sine angle of incidence divided by sine angle of refraction.
right? So this will give you the value of refraction or the value of refraction through any dense material. अगर आपके पास वाटर से रिफ्रैक्ट हो रहा है, ग्लास से रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो उनकी वैल्यूज जो है वो आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट जो है वो मीडियम के थ्रू। आप सिंपल एंगल मेजर कर लो। अगर कोई अननोन आपके पास लेट सपोज कोई मटेरियल होता है या मिक्सचर है वहां पे मटेरियल का, और आप उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का एंगल कैलकुलेट कर लो, then substitute that values into the formula of refractive index. So you will get the refractive index, or you can say that the quantity, that how much light is going to be bent into that material. So you can use this formula for that process, right? Yes. Okay. Or if we discuss about the refractive index of some famous material or some normal materials we discuss in our syllabus. First of all, if we discuss about air, so any idea what will be the refractive index of air? No, sir. Okay, since light is moving straight without any refraction in air medium, right? Because we always draw a straight line, there is no bending of light, or you can say that in our daily life we can observe light rays coming straight towards our eyes or straight towards the observer. So it means that light is not going to be refract in air medium, right? तो लाइट आपके पास एयर मीडियम में बेंड नहीं होती, जिसका मतलब ये कि उसका रेशियो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम हो जाएगा, राइट? So if we discuss about air medium, so the refractive index for air medium is equals to 1, और 1 का मतलब यहाँ पर ये कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा, राइट? तो इसका मतलब है वहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों एंगल्स आपके पास सेम होंगे। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू जो होगी आपके पास 1 होगी। जिस डायरेक्शन से आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है सेम ऑन दी अदर साइड बनेगा, क्योंकि लाइट आपके पास बेंड नहीं होती एयर मीडियम में, राइट? और सेकंड, इफ वी डिस्कस अबाउट द ग्लास, so the second material is made up of glass. So what will be the refractive index of glass? Refractive index of glass is equals to 1.52, राइट? मतलब जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास एयर मीडियम में होगा या रेयर मीडियम में होगा, तो ग्लास के थ्रू पास होने पे वो से 1.52 की वैल्यू या इतने टाइम्स जो है वो उसे रिफ्रैक्ट कर देगा, राइट? Sir, do we have to remember these values? You need to remember for just air, glass and water, right? Because sometimes Okay. they ask about in MCQs the refractive index of glass and water, because these are some famous examples. You don't need to remember all refractive index of particular material, but for these three materials at least you need to know about the refractive index of these materials. And third, if we discuss about water medium, so water will refract light with the ratio of 1.33, right? So it means that glass will bend light with more angle or with more quantity as compared to the water, right? Because the Yes. formation of glass is more solid as compared to that of water, so that's why glass will bend light with the greater angle. And if we consider some other example like diamond, so diamond will bend light with much greater angle as compared to the glass, because diamond is more solid and more strong in the structure as compared to the glass, right? So this is the example and some values of refractive index for different materials.
Or what happens if light goes straight through any two mediums? So what will be the angle of reflection? Let's suppose if there is a glass and air medium, as we previous discussed in our example, and light ray is passing straight through it. So will be any change there, or light will go straight through it? Because in these two examples, we discussed that light rays are passing with some angle. But if light ray is passing straight in it, so will there be any change or any refraction process going to be happen in there? Or light will go straight through the medium? Straight? Yes. So always remember when light moves with, or you can say that when light is moving perpendicular to the surface, which means that there is no angle, light is moving in the direction of normal line, right? So if light is passing straight through the mediums or two different mediums, so light will go straight just like the normal line, right? So there will be no change in the direction of light after passing straight through the medium. तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने कि आपके पास डेंस टू रेयर, रेयर टू डेंस क्या कंडीशन होगी, और अगर लाइट स्ट्रेट पास कर रही है या आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है उस मीडियम को, सो लाइट विल मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन विदाउट एनी refraction or bending through the material, right? Okay. Okay, so this is of topic refractive index, and there is an other formula to calculate this refractive index through any medium. Let's suppose we cannot measure the angle, और हमारे पास एंगल गिवन ना हो, किसी सिचुएशन में हम एंगल मेजर नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन होगी कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनी आइडिया? No. Okay, let's suppose if we consider the example, so let's suppose there is an example of a glass which is filled with water. So let's suppose if there is a glass or a container which is filled up with water. So water is a dense material, and we placed a pencil or a stick in it. This is completely filled with water, and we placed a pencil in this medium. So अगर आपने डेली लाइफ में भी कभी आपने एग्जाम्पल कंपेयर करके देखी हो कि अगर आपके पास एक ग्लास वाटर हो, ठीक है, मतलब आपने एक ग्लास में वाटर को फिल किया, अब वहाँ पे ग्लास भी आ गया, वाटर भी आ गया, तो दोनों डेंस मटेरियल कंबाइन हो गए, राइट? सो हम दोनों को एक ही डेंस मीडियम कंबाइन कंसिडर करेंगे, हम स्पेसिफिक डिस्कस नहीं कर रहे। और अगर आपने उसमें स्पून रखा हो या कोई स्टिक रखी हो, स्ट्रॉ रखी हो, तो जो ऊपर आपको पेंसिल या स्ट्रॉ की इमेज नज़र आ रही है, जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, तो वाटर के थ्रू पास होने पर उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी या सेम आपको वो डायरेक्शन में नज़र आएगी? कभी ऑब्जर्व किया आपने? Change? चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो द इमेज इज गोइंग टू बी समवेयर एट दिस पॉइंट, और यू कैन से दैट कि आपको जो उसकी इमेज होगी वो थोड़ी सी ब्रोकन टाइप नजर आएगी। मतलब आपको इस तरह लगेगा कि पेंसिल जो है वो मीडियम से पास होने के बाद सेंटर से ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, राइट? सो दिस इज ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हम तभी क्लियर देख पाते हैं जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर आती है,
राइट। अगर नॉर्मल आपके पास एक रूम में बिल्कुल डार्क रूम हो और आपने किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करना हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट पे टॉर्च लाइट को स्ट्राइक करोगे, ठीक है, ना कि जो है वो हम अपनी आईज में उस लाइट को स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आईज पे आती है तो हम फिर उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं, राइट। तो जब लाइट आपके पास वाटर के थ्रू और ग्लास के थ्रू पास होने पे बेंड होगी, तो उसकी इमेज भी आपको थोड़ी सी बेंडेड ही नजर आएगी, राइट। Yes. So this is due to the refraction of light. This is due to the refracted ray, or this is the process of refraction. So this is an other example. And now if there is no angle of incidence and there is no angle of refraction, so how we can calculate the refractive index of this water? So you can calculate with an other formula. You can use the concept of real depth. You need to measure the real depth of water divided by the apparent depth, which you can say that the virtual image or the virtual depth you are observing at that time, which is going to be happen due to the bending of light into the dense medium. So you can divide these quantities. So when you divide the real depth with the apparent depth, you will get the value of refractive index into that medium, right? Let's suppose the real depth in this example is going to be somewhere at this point. This is the real depth. This is the real depth, and if we place a pencil or a straw which is touching to the base of the water or the container, but there is a little bit difference between the base and the pencil because due to the refraction light is going to be bent. तो बैंड होने की वजह से वो हमें पेंसिल जो है वो उसकी बेस के साथ टच होते हुए नजर नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पर आपके पास डेप्थ में थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा एज कंपेयर टू द रियल वन, राइट। Sir, why won't it touch the base? एक्चुअली अगर आप वाटर को रिमूव करके देखो वो बेस को टच कर रही है, लेकिन क्योंकि हम मीडियम के थ्रू से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ दैट मीडियम and due to the bending of light through that medium, so the image is going to be at some point which is not touching the base of the container, right? That is the image of the pencil we are observing in the water or glass surface, right? Actually that object is in the contact with the base of the container, but since we are observing the image or the image of the pencil through the water glass, so that's why we observe that pencil is at some height from the base of that material, right? अभी भी confusion है? No, sir, it's clear. और मैं अगर आपको इसकी एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ, तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का आपके पास कॉन्सेप्ट ही होगा। अगर आप इस पिक्चर में देखो तो ऑब्जेक्ट देखो आपके पास किस पॉइंट पर है, यहाँ बिल्कुल बेस के साथ है, राइट। Yes. दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, कि एक्चुअली जो डेप्थ होगी उस ऑब्जेक्ट की या पोजीशन होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इज समवेयर एट द बेस ऑफ द स्विमिंग पूल और एनी मीडियम,
but due to the refraction of light, you can see that there is a normal line, and we study about that light will bend towards or away from the normal. So according to that phenomena, the image of an object is going to be at this point, right? So that is called the apparent depth, because this is not our actual depth. This is due to the refraction of light. Okay. Okay. So this is the example that how the image of an object is going to be at some different position. And if you consider more examples like this one, in this example, you can also observe this is the example of that pencil we are discussing about, that actually pencil is at this point. This is the real depth, right? But this Yes. then other object, और जो आपके पास second diagram या mention की है, which is mentioned by y. So this y is the apparent depth, or you can say that this is the actual image of that pencil we are observing in the water tank, right? So this is the difference in real and apparent depth, right? So we can also calculate the refractive index with the help of real and apparent depth by measuring the depth of that image or that object with the base of that water surface, right? Yes. Any confusion? No. Okay. Because in some questions, the incident angle and the refraction angle is not given there. So you can calculate with the help of real depth and the apparent depth given in the question or given in the diagram. So this is another formula we can use to calculate the refractive index of any medium or at any surface, right? Yes. Okay.